Starting video. This seems fine. Okie dokie. Let's go towards YouTube as well. Ding ding ding. There we go. Awesome. So I now can see YouTube as well as Facebook. Hello Abdul Muiz, क्या हाल है? How are you? Good morning, good evening, good afternoon, based on wherever you are. And hello to the Facebook people as well. Walaikum assalam wa rahmatullah. Eid Mubarak to you as well, Abdul Muiz. Yeah, I plan to do a stream this Saturday, just to, because I was having some questions in my chat about relocation, job opportunities, some things about technology choices as well. So I thought about kind of handling that. So I'm right now speaking to you folks on Facebook as well, और कुछ लोग YouTube पे भी हैं. So I'm going to be mixing Urdu and English both in this case. So how's it going, Abdul Muiz? And again, these sessions are just for me to hang out with you folks, just talking and just having some conversations. It will be about 45 minutes, 40 to 45 minutes. But yeah, the point is to ask questions from me, जो भी आपके जहन में हो, with regards to your career or job opportunities and whatnot. If you want to know things about me, myself as well, that also works. Girish Paraj says good night, lol. Okay, good night to you, mate. When do you folks sleep, by the way? Wherever you are, I'm not sure where you are exactly. Manu Naveed, hello sir, how are you doing? I'm also good. I hope you're doing good as well. Today has been a bit lazy for me, so to say. तो आज कुछ खास काम नहीं किया, but I will probably, most likely. You see those drawers behind me? Not the Facebook people, but now the Facebook people can see as well. Those drawers that you see behind me, I gotta fix those. तो मुझे उसमें से चीज़ें खाली करनी है और फिर fix वगैरह करनी है. तो that's gonna be my day today. But how have you folks been? Is it a good weekend for you? Are you doing anything interesting? Are you going somewhere or gonna go to a park? What are your plans? कहीं खाने जाना है? क्योंकि हम, at least for Pakistanis, most of the entertainment is कहीं खाने जाना है. That I know. Even for us, I think that's mostly the case. Me being here in Stockholm, लेकिन yes, it's sometimes more than just going to eat something as well. तो again folks जो Facebook पे join कर रहे हैं, this chat is to ask questions from me. So it's ask me anything sort of a stream. So I'm streaming on both Facebook and YouTube. If you want to go to YouTube for a better cam quality, you can go there. But this is to get in touch with, I don't know how many Facebook friends I have. I think more than 2,000. So yeah, how to be consistent in learning and hands-on projects? Asked by Mahnoor. I think the way to be consistent is to practice a lot, because it's programming, जो मुझे लगता है programming is mostly like any other profession or even sports sometimes. For instance, if you're a footballer, आपको obviously उसकी practice करनी है, then you also have to learn techniques. Or if you're a basketballer, you also have, if you play basketball, आपको उसकी भी practice करनी है, and then you have to learn techniques from videos. You have to work on your techniques and then kind of practice it along. Even अगर आप games खेलते हैं, for instance मैं games खेलता हूँ, तो मुझे idea है कि sometimes जब मैं games खेलने बैठता हूँ तो मुझे I do have to see how I'm doing. I do also have to kind of improve myself in terms of techniques. So the idea is to, I mean, if you want to play better games or be better at games, you need to analyze your technique, see बहुत सारे लोग किस तरीके से वो काम करते हैं, and then improve it. Same goes for programming. Hands-on projects के लिए जो मुझे जो interesting चीज़ें लगती हैं
वो लगती हैं क्लोनिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर आप वाकई लर्निंग फेज़ में जाना चाह रहे तो क्लोन करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यू फाइंड वीडियो ट्यूटोरियल्स जिसके अंदर वो कुछ आपसे बनवा रहे हो। आई एब्सोल्युटली लव दोस ट्यूटोरियल्स इन विच they kind of have you create something throughout the videos, and I think that's what I really like about different projects. So what I do for learning and being consistent is कि मैं tutorials वगैरह देखता रहता हूँ। different channels मैंने follow किए मैं ट्विटर पे, तो मैं ट्विटर पे भी देखता रहता हूँ कि लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई और न्यू सो टू से कोई न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर विच इज़ अ सॉफ्टवेयर या अ वेब एप्लीकेशन, तो मैं उसको भी सॉर्ट ऑफ ट्राई करता हूँ कि उसको मैं देख लूँ कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। फॉर इंस्टेंस अभी मैंने रिसेंटली शेयर किया था ऑन माई फेसबुक, देयर इज़ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड bio.link, जिसमें आप अपना एक ऑनलाइन बायो बना सकते हैं। तो यू कैन एंड इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो एंड सेट अप योर लिंक्स एंड देन इट जनरेट्स अ रियली गुड UI फॉर यू, और उसमें आप अपने कलर्स कस्टमाइज़ कर सकते हो और different sort of aspects हैं उसके अंदर। But the good thing is that they are kind of really simple things but presented in a really good way। और अभी उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट लिया bio.link ने, अब वो सब्सक्रिप्शंस जो है वो इनेबल करने वाले हैं और मज़ीद काम कर रहे हैं जिससे फिर वो पैसे कमा सकें। बट इन जनरल दैट आइडिया इज़ रियली गुड, और अगर आप उसको क्लोन करने की ट्राई करो दैट्स ऑल्सो अ रियली गुड थिंग दैट यू कुड डू जस्ट फॉर प्रैक्टिस फॉर इंस्टेंस। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और कंसिस्टेंट रहना है तो यू कैन डू दिस। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन रिकमेंड यू फॉर टाइम मैनेजमेंट इज़ try to have some sort of journal जहाँ पे आपके जो goals हैं वो defined हो कि what do you have to do in like 1 month or 3 months। For instance, I'm not sure if you can see, Facebook people can see as well, those on YouTube cannot see, but just around this whiteboard that I have some post-its। तो there are small post-its that I use for to do's कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है और किस टाइमलाइन में करनी है। आई ऑल्सो हैव अ जर्नल, मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है जिसमें मेरा एक स्केड्यूल है कि ओके मुझे 2 हफ्ते में एक दफ़ा एक वीडियो रिलीज़ करनी है। इसी तरीके से मुझे अगर कोई बुक रीड करनी है तो मैं दिन में कितने घंटे जो है वो बुक रीडिंग के लिए दे रहूँगा, फिर मैं जिम के लिए कितना करूँगा। तो टू बी कंसिस्टेंट यू नीड टू काइंड ऑफ प्लान अ स्केड्यूल। और सबसे बेस्ट वे मेरे ख्याल से यही है कि यू गेट सम पोस्ट-इट्स फ्रॉम द शॉप, और आप उस पर छोटे छोटे से नोट्स लेकर देन डिफाइन कर सकते हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। देयर वाज अ रियली गुड वीडियो फॉर मैनेजिंग टाइम। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मानूर, आई कैन ऑल्सो शेयर दैट वीडियो ऑन यूट्यूब। आई कैन सी वन क्वेश्चन on Facebook, open source worth for beginners. Open source is really good for, it doesn't matter if you're a beginner or an advanced software engineer or whatever. Open source is beneficial for everyone. The idea for open source is um, you get to work with projects with folks who are much more experienced than you. तो अगर आप किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो जिसने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया है वो ऑब्वियसली आपसे सीनियर होगा, ठीक है, उनका कोड क्वालिटी भी आपसे ज़्यादा बेटर होगी। तो इट्स डेफिनेटली वर्थ लुकिंग इनटू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। बट आई वुडेंट से कि आप जो है वो सब कुछ छोड़ के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में लग जाओ। एज अ बिगिनर इट्स नॉट अ रियली गुड आइडिया। एज अ बिगिनर व्हाट रियली इज़ अ गुड आइडिया इज़ डैट कि आप अपने कोर जो कॉन्सेप्ट है उस पर अच्छा खासा फोकस करो, और फिर साथ में जैसे ही मौका मिले ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दो। मोहम्मद खिजर कमाल पूछ रहे हैं ऑन यूट्यूब विच इज़ द बेस्ट जेंगो और नोड JS। दे आर बोथ डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट sort of टेक्नोलॉजी और स्टैक। जेंगो इज़ रियली गुड फॉर पाइथन अगर आपका पाइथन में इंटरेस्ट है। इट ऑल्सो डज द सेम थिंग। और नोड JS ऑब्वियसली इज़ बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, सो उनका कोई ख़ास कंपैरिजन नहीं है आपस में, बट डिपेंड्स ऑन जो आप बेस्ट पूछ रहे हो उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट। तो आप परफॉर्मेंस के लिहाज से बेस्ट बोल रहे हो, लर्निंग के लिहाज से बेस्ट पूछ रहे हो, टाइम टू डेवलप समथिंग के लिहाज से बेस्ट पूछ रहे हो, लर्निंग कर्व कितना होना चाहिए उस लिहाज से पूछ रहे हो। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स
तो उसके लिहाज से फिर मैं बता सकता हूँ कि वो कि आप जेंगो या नोड जेएस दोनों में से क्या प्रेफर करोगे. तो इट्स बेसिकली पाइथन और नोड जेएस, क्योंकि नोड जेएस में भी देन वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स दैट वी कैन लुक एट. बट येस, फॉर माई प्रेफरेंस, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट इंजीनियर हूँ और मैंने अच्छा खासा काम जावास्क्रिप्ट पे किया है, आई पर्सनली रियली लाइक नोड जेएस. आई हैवंट फाउंड एनी बैड थिंग्स जिसको मैं बोलूँ नहीं यार ये नोड जेएस में अच्छा नहीं है और इसको यूज़ नहीं करेंगे. तो दैट्स फॉर मी. Mohammad Rafiq is asking, Assalamu alaikum, is it important to know some design patterns before graduating or some system design patterns? It is not really important. I mean, it's really good अगर आप design patterns learn कर लो, but it's not crucial. यानी कि आपको design patterns के बगैर भी job मिल जाएगी. Again, it depends on कि आपका purpose क्या है. क्या आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे design patterns बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे, क्या आपको ऐसी इंडस्ट्री में जाना है? इफ़ येस देन ऑब्वियसली दे आर इम्पॉर्टेंट. लेकिन एज अ जनरल रूल ऑफ थम, जो जिस तरह की कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर और जिस लेवल का वो काम कर रही हैं, स्पेसिफिकली व्हेन गेटिंग ग्रेजुएट्स, आई डोंट थिंक यू विल बी वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स बिल्कुल शुरू में. तो इट्स नॉट वर्थ वेटिंग कि आप जॉब मिलने से पहले पूरा 1 साल लगा के या 3 महीने या 4 महीने वट एवर सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न्स और उस पर लगाओ डेडिकेटेडली. बट अगर आपके पास टाइम है और आप इसको लर्न करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके थ्रू आउट करियर वो बहुत अच्छा बहुत यूज़फुल होगा. तो डिज़ाइन पैटर्न्स और सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न्स ऑब्वियसली दे आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट अगेन. On the basis of performance, Khizar, I think Node.js and Django both are quite similar. The good thing about Django is obviously it's based on Python, and when it comes to Python, then you have a lot of libraries that are compatible with Python, and then they kind of work on a low level when it comes to kind of using GPU, when it comes to obviously data analysis and artificial intelligence. So I personally think कि अगर data intelligence और data analysis और artificial intelligence से related projects हैं तो I would probably go for something related to Python, maybe Django. But I don't think there's much difference. अगर होगा तो 19-20 का होगा. But I can look more into it, of course. Any video to start with open source contributions? I'm pretty sure कि हमने कुछ आई थिंक आई हैव वन वीडियो जो मैंने शायद बनाई थी ऑन यूट्यूब. आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक देर वॉज अ वीडियो जो मैंने क्रिएट की थी ऑन ओपन सोर्स. आई कैन शेयर दैट विद यू. उसमें कुछ लिंक्स भी हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी ओपन सोर्स जर्नी. ओके, आई फाउंड इट. आई एम गोइंग टू जस्ट पेस्ट दैट इनटू द लाइव स्ट्रीम for you, Ahmed Raza. Let's see. Compatible with Python, and then yeah, I'm gonna just type this for you. There we go. And Facebook doesn't like my link for some reason. Okay, it did. Okay, so you should have a link now, Ahmed. Cool. Let's see, what do we have apart from this? Manur is asking, do front-end developer need to learn back-end? No, they do not. If you're interested in front-end, you only need to learn front-end. अगर आपको back-end में interest है, if you like SQL queries या database queries, if you like deployments or backend work like creating REST APIs, अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो you can learn backend. But being a front end, you don't need to actually learn backend. For instance, मेरा अभी जो current role है in Synchron, I'm a software architect, but I'm a front end software architect. So I'm going to lead the front end teams. I don't need to know about backend at all in my current job. क्लार्ना के अंदर आई वॉज फॉर 2 years आई वॉज अ सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर. तो मुझे बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का काम करना पड़ रहा था, बट दैट वॉज माई जॉब पोजिशन. तो इट डिपेंड्स. लेकिन क्लार्ना में ज्वाइन करने से पहले आई यूज़ टू डू फ्रंट एंड, तो मैंने बैक एंड खुद से लर्न किया था, बट आई डिड नॉट नीड टू. तो इट डिपेंड्स. अगर आपको लगता है कि आप फ्रंट एंड में बहुत अच्छे हो गए हो तो आप जो है वो बैक एंड भी लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इट्स गुड टू हैव मोर देन वन स्किल्स, but it's really not good to have many skills but not being really good at even one of them.
तो अगर आपके पास एक स्किल ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग है तो आप मल्टीपल स्किल्स में थोड़ा थोड़ा लर्न कर सकते हो, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एक स्किल होना चाहिए कोई ना कोई. तो फॉर इंस्टेंस आई नो माई स्ट्रेंथ इज फ्रंट एंड एंड एंगुलर. Looking at the messages on Facebook as well. If you want to join folks on Facebook, if you want to join on YouTube, you can also go to my YouTube channel and then ask questions there as well. It's much more helpful for me if you ask there on YouTube. Shazib says, hi, do you recommend boot camps or self online learning, YouTube free code camp, etc? That's a good question. It depends कि आपका लेवल क्या है. When it comes to being a software engineer, अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक फ्री कोड कैंप इज़ गुड. यूट्यूब इट सेल्फ इज़ रियली गुड एज वेल. आई थिंक इट डजेंट मैटर, और शायद इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कहाँ से लर्न कर रहे हो. बट फ्री कोड कैंप एंड यूट्यूब इज़ ऑब्वियसली समथिंग दैट्स रियली हेल्पफुल. आई मीन यूट्यूब से क्या कुछ नहीं सीखते हम लोग, हर चीज़ के लिए यूट्यूब ही जाना पड़ता है फॉर ट्यूटोरियल्स एंड व्हाट नॉट. तो I think कि as a beginner you can start working on tutorials from YouTube and also can look into free code camp. अगर कोई boot camp conduct कर रहा है तो it's a really good idea to join that. यानी कि अगर कोई physical boot camp है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो और वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है. अगर कोई वर्कशॉप करा रहा है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि बूट कैम्प से आपका मतलब ये था. ठीक है, तो डेट्स ऑल्सो रियली गुड. बट सेल्फ लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग इज़ सॉर्ट ऑफ रियली गुड एज वेल, यानी कि वो किसी से कम नहीं है. आई हैव बीन सेल्फ लर्निंग एवरी थिंग माई सेल्फ. आई मीन जब मैंने गिटार बजा रहा था एक ज़माने पहले, तो यानी कि इन टर्म्स ऑफ स्किल इट्स नॉट डैट कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा था मैं. तो फॉर इंस्टेंस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी मैंने वहीं से सीखा था. इसी तरीके से और जो स्किल्स हैं वो भी मैंने वहीं से सीखे थे. तो इट डिपेंड्स, यानी कि इवन डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स वगैरह मैंने वहीं से सीखे. इवन वीडियो एडिटिंग जो आप देख रहे होते हो मेरी यूट्यूब वीडियोज़ में, तो वो भी मैंने ऑब्वियसली यूट्यूब से ही सीखी. डिफरेंट टेक्निक्स, लाइटिंग जो आप देख रहे हो कि यानी कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यहाँ पे लाइटिंग है. आप देख रहे हो ये जो मेरा एरिया है वो थोड़ा सा ब्राइट है, यहाँ पे शेडोज़ कम हैं. देन यानी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं. इफ़ यू सी माई हेडफोन तो यहाँ पे आपको एक पर्पल कलर की लाइटिंग नज़र आ रही होगी. ये जो मेरी चेयर है, ये इसके बैक साइड पे भी ये एक पर्पल सी लाइटिंग आ रही है. ठीक है, एंड दैट इज़, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ हुई हैं इवन फॉर लाइटिंग. तो वो भी मुझे यूट्यूब से मिली. तो आई मीन यूट्यूब को हल्का नहीं लेना चाहिए इन शॉर्ट. ठीक है. No more questions on YouTube so far. I have questions on Facebook. One question is how many hours do you program on daily basis? Any refreshment habit while working? Good question. I mean I do work 9 to 5 on my job of course. तो वो तो count हो ही रहा है. ठीक है. उसके अलावा I think I also work 2 to 3 hours depending on different things. For instance, I've been working on an open source project जो मैं डेवलप कर रहा हूँ. उसके अलावा आई डू हैव सम ओपन सोर्स लाइब्रेरीज जो मैंने खुद क्रिएट की हैं, तो उनको भी मुझे थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है. तो अपार्ट फ्रॉम 9 to 5 आई थिंक आई डू वर्क 1 or 2 hours मोर. पहले आई यूज़ टू वर्क अ लॉट. आई मीन मैंने 18 घंटे भी काम किया है, विच मीन्स कि मैं सिर्फ 6 घंटे सोता था या कभी कभार 4 घंटे सोता था. तो इट डिपेंडेड ऑन द सिचुएशन बैक देन. बट आई वुडेंट रिकमेंड कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो इफ़ यू डोंट हैव इट. यानी कि ऑब्वियसली योर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वट एवर यू आर डूइंग. तो हेल्थ का ख्याल रखते हुए यू कैन वर्क अ लॉट. एक चीज़ जो मैं ज़रूर बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ हैबिट इज़ ऑलवेज टेक गैप्स व्हेन यू आर वर्किंग. अगर आप कॉन्स्टेंटली जो है वो 5 से 6 घंटे काम कर रहे होते हो तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती. और ये मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. तो टेक अ ब्रेक, गो आउटसाइड, एक चक्कर मार के वापस आ जाओ एंड देन यू कैन कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट. उससे माइंड जो है वो काफ़ी फ्रेश हो जाता है. आई ऑल्सो टेक ब्रेक्स और मैं कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देख लेता हूँ या फॉर इंस्टेंस कोई फ़नी वीडियोज़ देख लेता हूँ. कोई फ़नी चैनल्स मैंने फॉलो किए हैं तो मैं वो देख लेता हूँ. तो आई ऑलवेज टेक गैप्स when it comes to programming. One of the things that really help me in terms of habit is I have connection with good people जिनसे मैं ideas वगैरह share कर सकता हूँ. तो you can also do that. You can also share ideas with me as well. I mean you might have
me on Facebook or YouTube, whatever, but you can get replies from me as well. तो one of the habits is obviously take different gaps. एक चीज़ जो बहुत मोटिवेटिंग होती है वो होती है whenever you are working on something, share it with others. उसके snapshots लेके share करो, उसको अगर कहीं डिप्लॉय कर सकते हो तो वो शेयर करो. तो आई डोंट नो what the chemical is called जिससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, but that chemical kind of releases in your brain whenever you get a praise from someone. तो जैसे ही आपको कोई praise मिलती है कि हाँ यार this was a really good project or whatever, तो उससे जो motivation आपकी kind of recurring आती रहती है, तो you can refuel yourself with that motivation. Another question that I can see on Facebook is my question is, why would you choose Angular instead of React? Very good question. Angular is a complete framework और React जो है वो एक library है, ठीक है. तो अगर आपकी टीम में, and that's my opinion from working with React for about more than 3 years now and working with Angular for over 8 years now, कि अगर आप React यूज़ कर रहे हो और आपकी टीम के अंदर कोई सीनियर इंजीनियर नहीं है जो कि सारे रूल्स, प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवा सके थ्रू आउट द टीम, तो React का प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है आगे मेंटेन करना फॉर मीडियम टू लार्ज स्केल एप्लीकेशंस. वाइल इन Angular इट्स नॉट दैट केस. द रीज़न इज़ कि React जो है वो अनओपिनियटेड है, विच मीन्स के यू कैन वर्क विद React हाउ एवर यू वॉन्ट, विच मीन्स एक टीम के अंदर 3 लोग हैं तो वो तीनों भी डिफरेंट स्टाइल ऑफ कोडिंग कर सकते हैं. कोई सेमीकॉलन्स लगा रहा है स्टेटमेंट्स के एंड में, कोई नहीं लगा रहा, कोई जो है वो लेट से ज़्यादातर मैप का यूज़ कर रहा है, कोई सिंपल फॉर लूप्स यूज़ कर रहा है. ये तो सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ. फिर उसके अलावा डिज़ाइन पैटर्न्स में कोई जो है वो स्टेट मैनेजमेंट के लिए क्या यूज़ कर रहा है, कोई जो है वो विद इन कॉम्पोनेंट स्टेट मैनेज कर रहा है, कोई कॉन्टेक्स्ट API यूज़ कर रहा है. तो इट बिकम्स अ मेस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपकी टीम के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला कोई सीनियर इंजीनियर नहीं है. वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट क्लारना, जो कि React और React नेटिव पे काम करती थी, कि क्लारना के अंदर उसकी एक ओन कोर टीम है जो कि स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स करवाती है, विच मीन्स वो सारे ES लिंट रूल्स और प्रिटियर के रूल्स, उसके अलावा PR रिव्यूज़, वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रही होती है. तो इस तरह की टीम्स में React बहुत अच्छी है. लेकिन Angular बीइंग वेरी ओपिनियटेड कि किस तरीके से काम करना चाहिए, कहाँ कंपोनेंट के अंदर क्या कोड होगा, सर्विसेज के अंदर क्या कोड होगा, हम इनलाइन टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे या व्हाटएवर, हम टेम्पलेट फाइल्स यूज़ करेंगे, फिर हम SAS यूज़ करेंगे या व्हाटएवर. तो इस तरह की चीज़ों में आई थिंक Angular इज़ रियली ईजी टू लर्न. अगर मुझे React चूज़ करनी होगी तो मैं इसलिए करूँगा कि उसका लर्निंग कर्व बहुत कम है, चीज़ें ठक ठक करके यूँ बन जाती हैं. लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि React एप्लीकेशंस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है व्हेन इट कम्स टू एंटरप्राइज एप्लीकेशंस. बट दैट्स माय ओपिनियन. Taking questions from YouTube. What are your hobbies and how much time do you code? मोहम्मद हशाम पूछ रहे हैं. I'm not sure if it's Hasham or Hasham. Let me know. But मेरी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ ये हैं कि मैं apart from coding, I do like to play games. For instance, nowadays मैं Fall Guys खेल रहा हूँ और मैं Call of Duty खेल रहा हूँ. तो मैं Call of Duty बहुत ज़्यादा खेलता हूँ और उसकी मैं कई दफ़ा जो क्लिप्स वगैरह भी अपलोड करता हूँ. तो अपार्ट फ्रॉम कोडिंग व्हाट आई लाइक टू डू इज़ प्ले गेम्स. दैट्स वन थिंग. एक और हैबिट जो अभी रिसेंटली इनिशिएट हुई है वो है रीडिंग बुक्स. तो आई एम रीडिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बुक्स. उसके अलावा व्हाट आई लाइक टू डू इज़ आई लाइक टू गो टू पार्क्स जहाँ पे मैं बैठ के नेचुरल हवा खा सकूँ. तो अक्सर मैं बाहर चला जाता हूँ और आसपास अगर कोई पार्क हो तो मैं वहाँ चला जाता हूँ. आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. तो मैं जो है वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. आई लाइक टू वॉच मूवीज़. आई लव हॉरर मूवीज़. आई एम नॉट श्योर कितने लोग ऐसे हैं जिनको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं. इफ़ यू आस्क मी अबाउट एनी हॉरर मूवी, मोस्ट लाइकली इट्स 90% चांस कि मैंने वो देखी हुई होगी, चाहे वो बहुत ही बेकार हो या वो बहुत अच्छी हो, वो मैंने देखी हुई होगी. तो वट एवर, यानी कि आप रिंग की बात कर लो, ग्रज की बात कर लो, पर्च की बात कर लो, कॉन्जरिंग की बात कर लो, एनाबेल की बात कर लो, वट एवर जो भी आ चुकी हैं. तो आई रियली लव हॉरर मूवीज़. और या अपने फ्री टाइम के अंदर मैं मूवीज़ देख रहा होता हूँ, नहीं ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ देख रहा होता हूँ. द आई, यस, मैं देख चुका हूँ.
इवन कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो इंग्लिश में नहीं भी हैं, मैं वो भी देख चुका हूँ। यानी कि वो आई थिंक देयर वर सम फ्रेंच मूवीज़ और कुछ आई थिंक चाइनीज़ मूवीज़ भी थी। जैसे अभी एक वो थी द एट्थ आई, इसी तरह ट्रेन टू बुसान थी, और भी बहुत सारी हैं इस तरह की। तो आई वॉच ऑल ऑफ दोज। हाउ मच टाइम डू यू कोड? एज आई सेड, फिल वक्त मैं पहले बहुत ज़्यादा कोड करता था, लेकिन फिल वक्त आई थिंक मैं 9 to 5 कोड करने के अलावा 2 से 3 घंटे और कोड करता हूँ, मोस्ट लाइकली रात के टाइम में। तो आफ्टर डिनर आई काइंड ऑफ स्पेंड 2 to 3 hours। इट्स नॉट जस्ट कि मैं बिल्कुल बैठ के कुछ कोड कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं कंटेंट देख रहा होता हूँ, मैं वीडियोस देख रहा होता हूँ, लर्निंग कर रहा होता हूँ। फायरबेस की हो गई या एंगुलर की हो गई या इसी तरह का कोई मशीन लर्निंग की हो गई। आई बीन वर्किंग ऑन अ रियली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि मशीन लर्निंग पे है। I'm going to potentially show you that really soon. Most likely it's going to be open source, but I cannot say it right now. But yeah, there's one really interesting artificial intelligence project that I'm working on as well. I can see there are questions from Facebook. Any new technology you prefer to learn, like Python or Flutter or data science? I think Flutter is something that you can learn. I like Flutter quite a lot. और उसका रीज़न ये है कि गूगल इज़ नाउ पुशिंग दैट टू बी प्रॉब्ली देयर मेन टेक्नोलॉजी फॉर द कमिंग ईयर्स। तो आई कैन सी दैट इसकी काइंड ऑफ बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फ्यूचर भी अच्छा खासा है। तो आई वुड से फ्लटर, क्योंकि फ्लटर में मैं खुद भी तकरीबन 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ, और आई सीन इट ग्रोइंग रियली गुड। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छी है, कंटेंट बाहर बहुत अच्छा है। तो आई वुड से यू कैन यूज़ इट, यू कैन गो विद फ्लटर। टेकिंग क्वेश्चंस ऑन बोथ साइड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट लेट्स सी। सलमान कह रहे हैं, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो इन विच यू टेल अबाउट JS standard practices and how you can make your code efficient? Really good. Salman Mughal, I have just released a video. अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे तो मैंने अभी लास्ट वीडियो जो अपलोड की है, डेट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर कोड क्वालिटी यूजिंग गिटहब एंड सोनार। तो सोनार जो है वो एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिससे जो आपको ये बताता है कि आपके कोड के अंदर कितनी डुप्लीकेशन हुई है, कितने फ्लॉज हैं। फॉर इंस्टेंस आप इस चीज़ की बजाय ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मैप का फंक्शन होता है एरे पे जो लगता है, और वो यूजुअली कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो मेरा कोड एक ऐसा था जिसमें मैंने वो मैप का फंक्शन लगाया हुआ था, लेकिन मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ था। तो सोनार ने वो भी पकड़ लिया और उसके बारे में मुझे बताया कि यार ये इम्प्रूव हो सकता है, इसके बजाय आप फॉर लूप यूज़ कर लें या वट एवर। तो यूज़ दैट in your project and then you will see कि वो क्या suggestions दे रहा है to improve your code quality. JavaScript standards एक बहुत broad topic है, और उसको किस तरीके से we can manage, it's hard to say, so I'm gonna have to boil it down अगर मैं कोई वीडियो बना भी रहूँगा तो। One question is from Ali Nawaz, future of software engineering in Pakistan. Future of software engineering in the whole world is amazing. You don't have to worry about it. तो just get into software engineering. It's a really evergreen field. उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहीं नहीं जा रही। आप जो है वो अभी लेट्स से अगर आप वेब एप्स पे, मोबाइल एप्स पे बात कर रहे हो, तो आगे जाके आप AI पे बात कर रहे होगे, मे बी, नॉट श्योर। ब्लॉकचेन आ गया और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आ गई। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम यूट्यूब। योर फेवरेट हॉरर मूवी, ऐसा पूछ लिया। माई फेवरेट हॉरर मूवी would be I don't actually have a favorite movie. I think maybe it would be Conjuring. I think that's gotta be it. Conjuring should be my favorite movie of all time so far. But the thing is, I really like a lot of horror movies, so it's hard to pick one, but maybe Conjuring could be one. Please recommend good Node.js Express.js resource for learning. Okay, I'm gonna have to look for this one. I do know that there are some resources on YouTube. For instance, the Academine channel, you can also look at that as well. But I would recommend, if you're just starting, just go to Express.js website and then follow their getting started tutorial. If you do that, you'll learn a lot about what it is about.
I also have, I think I do have a series on my YouTube channel about a mean stack application. I'm not sure if you have seen that or not, but you can follow that as well. So if you go to my older videos, you should be able to see a mean stack playlist. Let me actually have a really quick look at that and see if I can find yeah, I do have a playlist. I can share the link with you real quick right here on YouTube. Oh, come on, there we go. I'm just sharing the playlist right there in chat, so you should be able to see that as well. All right, more questions. Would you refer any horror series on Netflix? There is one series was I cannot recall, The Haunted House or something. Haunted Netflix, Haunted Hill House, something. Yeah, I think Haunted Hill House is the one. Yeah, The Haunting of Hill House. That is a series I can recommend on Netflix. So totally awesome. You can follow that one. I've also been looking at one series which is Van Helsing. It's not horror per se, but it's a good one. The story is really good. So and I think I just watched the last one recently. So Haunting of the Hill House is definitely a recommended series on Netflix. Muhammad Hasham says, any one tip you would like to give to yourself when you were a junior developer? The one tip that I would like to give myself as a junior developer, if I go back in time, would be do not rush things. Take your time. I mean, it's not one, but a couple of tips. So do not rush things, take your time, and it's okay to say that you do not understand something. So these are the things that I would give myself as a tip. Ali Nawaz says, I am Ali Nawaz from Hyderabad. I study in Government College Hyderabad. I want to become a software engineer. So you have reached where I want to reach. You guide me. I will be benefit a lot. Thanks. Ali Nawaz, welcome to the stream first of all. And yeah, I think the main thing that you need to understand is कि जहाँ पे आपको जाना है, आई एम नॉट श्योर मैं वहाँ पे हूँ या नहीं, बट जहाँ पे आपको जाना है उसके लिए आपको बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे. तो डो नॉट थिंक अबाउट वो सारे कदम, बट जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम. डोंट वरी अबाउट कि आपको कहाँ जाना है. जस्ट अभी जो आपको फॉरन स्टेप लेना है उस पर फोकस करोगे तो आई थिंक इट शुड बी रियली ईजी फॉर यू टू गो फॉरवर्ड. Umar Khan says, how difficult is it to get a remote job while being in Pakistan? Like you were in Modus Create. Any tips if someone is interested in remote work? Really good question. देखो, पहली चीज़ तो ऐसी है कि जॉब्स मिलना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. पहले तो अपना माइंड ये क्लियर कर लें. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू गेट अ रिमोट जॉब बीइंग इन पाकिस्तान. इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू गेट अ रिमोट जॉब इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस कि आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो. ठीक है, रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं, अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं. इवन दोज जॉब्स जो रीलोकेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे मुझे प्रोवाइड की गई फॉर स्वीडन. लेकिन उसके लिए आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके स्किल सेट बहुत अच्छे होने चाहिए. अगर ये है तो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अ रिमोट जॉब, and it should be really easy for you to get a job. But again, for that to happen, your portfolio should be really strong. You should be able to show that you have a strong portfolio. Obviously you have to have an online presence or your LinkedIn or something that you can show okay, I'm really good and I deserve this remote job, and then you can get it. एक और टिप जो मैं दे सकता हूँ ये कि I already shared that in my previous streams कि just like we have this rosie.pk वेबसाइट इन पाकिस्तान, इसी तरीके से और भी शायद एक दो वेबसाइट्स और हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है. सिमिलरली हमारे पास कनाडा में, यूएस में, इवन यूरोप के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इसी काम के लिए बनी हुई हैं, जहाँ पे रिक्रूटर्स जाते हैं, पोस्ट डालते हैं और आप फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो.
तो इट्स रियली ईजी, लेकिन हम वो काम ही नहीं करते ना, हमारा माइंड ही वहाँ नहीं जाता कि यार ये पॉसिबल भी है। तो आप सीधा सीधा जाओ उन वेबसाइट्स पे और जाकर जो है वो अपनी सीवी अपलोड करो, अपने पोर्टफोलियो अपलोड करो, अपना गिटहब अपलोड करो जहाँ पे कुछ दिखाने लायक हो, अपना लिंक्डइन डालो, अपने रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डालो, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि उसके लिए आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए जो आप शो कर सको, ठीक है। या तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, 4-5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है कि यार ये अच्छा एक्सपीरियंस है, 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। और उस पर हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बाहर जो रिमोट जॉब्स होती हैं इवन, या जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो भी हायरिंग होती है, उसमें 4 to 5 ईयर्स वाले अच्छे इंजीनियर्स की डिमांड बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो वो रिलेटिवली ईजी मिल जाती है। अगर आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो यू नीड टू शो डैट यू आर रियली गुड, यू नीड टू हैव अ रियली गुड पोर्टफोलियो डैट यू कैन शो, ठीक है। अगर आप एक कंपनी के अंदर सिर्फ इंटरनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हो, तो उन प्रोजेक्ट्स की अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है तो वो एटलीस्ट उसके स्क्रीनशॉट्स लेके या उसका लिंक एटलीस्ट आप अपने लिंक्डइन में डाल दो या रेज्यूमे में डाल दो या वट एवर वहाँ पर डाल दो। एक चीज़ जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा रिमोट जॉब्स गेन करने के लिए, वो ये कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, जिस टीम के भी साथ काम कर रहे हो, उस टीम में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके मेंबर्स से रिकमेंडेशन ज़रूर लो लिंक्डइन पे, ठीक है। आस्क फॉर देयर रिकमेंडेशंस, सिंपली से इफ़ यू लाइक्ड वर्किंग विद मी इन दिस प्रोजेक्ट, प्लीज़ रिकमेंड मी, आस्क दिस फ्रॉम योर सीनियर, आस्क दिस फ्रॉम योर जूनियर, आस्क दिस फ्रॉम योर पीयर, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू गेट फर्दर गुड जॉब्स really easily, ठीक है। तो if you're interested in remote work, apply through different website. That would be my one tip that I can give. Second tip is obviously your LinkedIn should be absolutely strong, क्योंकि recruiters का इस वक्त one of the major sources of hiring is LinkedIn, ठीक है। मेरे पास भी अक्सर ईमेल्स आती रहती हैं और ऑब्वियसली मैसेजेस भी आते रहते हैं लिंक्डइन पे, इसी तरह आपके पास भी आना शुरू हो जाएंगे। बट अगेन फॉर डैट प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। If you want inspiration, you can go to my LinkedIn and see how I have put everything. उसमें मेरा अबाउट सेक्शन भी है जिसमें सब लिखा हुआ है, मेरा किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, सबसे पहले तो वही देखते हैं ये लोग। उसके अलावा फिर जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी प्रॉपर्ली लेड डाउन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ कंपनी का नाम डाल दिया, मैंने कोडर लैब्स में काम किया है या मैंने 10 पल्स में काम किया है। व्हाट वाज योर रोल इन दैट कंपनी, और आपने क्या परफॉर्म किया। अगर आपके अंडर लोग थे तो यू नीड टू मेंशन दैट एज वेल, दैट हे I used to lead 2 to 3 people in this team. I've worked on multiple projects, blah blah blah. So that should be quite visible. तो उस चीज़ से आइडिया होता है कि हाँ बंदा किस लेवल का। I'm watching some messages on Facebook as well, but it seems like more people are just watching there and not asking any questions. It's fine. YouTube पे I can see a question. Any ideas about uni final project related to AI and web? Yeah, there are lot of ideas. I mean, it depends on where you are और वो किस तरह के ideas accept करते हैं. For instance, let me think. One of the things that you could do, I'm not sure how it's going to work or how good it's going to work, is if you can get data of what a person does when they tell the truth or when they lie, based on their what do you call their pulses or heartbeat. I don't know, you do the research, I'm just giving you the idea. So you could potentially create a lie detector, for instance, with previous data of pulses or electromagnetic waves, or I don't know what it works on, but do some research and see how they can tell if a person is lying or not, or telling the truth or not, and then you build something around that. You might have to get obviously some sort of hardware that you can bind around a person's hand, or if you can use camera for that, for facial expressions, you can do something like that and then create something out of it. So that's one idea I could give. Another idea would be try to build something like if you have items in a store and each person goes and picks one item from the shelf, you automatically add that item to their cart,
and then when they go to the checkout, they would already have the list of items that they have picked. But that means having a lot of cameras in the store. But you can just create a simple prototype that, hey, this is a shelf, there are 5 items there, the camera already knows, or our system already knows what items they are. A person came and picked one of those, and now we identify which item was picked and then add that to the cart. So this is one suggestion. I hope you pick one of those and then let me know once you're done with that. Mohammed Hasham, how to avoid burnout? Take a break. Taking a break is the best way to avoiding burnouts. So if you're working in a company and you are burning out, you need to tell your HR that, hey, this is becoming a problem for me because I've been working like so late for 3 to 4 days, and then you can ask for leaves. So that is something that that I can recommend. When you're feeling depressed or something, there are a bunch of things that you can do. For instance, you can have a journal, and then kind of this is something that I plan to do, but I haven't done so far. But it's about take a gap. Then if you're feeling depressed, you can just list down 3 good things that happened today, and that could be anything, and 3 good things that you're grateful for. For instance, if you're breathing and you're not dead, you should be grateful for that. And you could put small things like that as well. And then if you have bigger things, that's even better. So 3 good things that you can think of just before going back to sleep. You can just note that down on your notebook, and then when you wake up, the first thing that you should see is those 3 things as well. So you're not going to be really depressed because you're grateful. So to avoid burnout, yeah, just take a break. Assalamu alaikum sir, will GitHub Copilot take over programming jobs? Good question. I don't think so. I tried it and it's really bad, or at least my experience was bad. One of the things that I don't really like is when I'm typing, I don't want it to give me suggestions before I actually want it. So I'm typing something and then I'm seeing different things. I really didn't like it, but maybe, I'm not sure. I don't think GitHub Copilot can take our jobs. It's gonna make things easier for us so that we don't have to remember things. But that's also, I don't think it's a really good idea, because then people would just be copy pasting code without actually understanding how things work, specifically junior engineers. So I don't know. I don't have a lot of info about that. I wanted to try out GitHub Copilot और फिर उसके बाद मैं अपना view दे सकता हूँ. But so far, I don't think so. It's not gonna take away the jobs from us. Vishal Singh says, how do we start open source projects? Vishal, there is a video in my YouTube channel that should be pasted right here in the Facebook stream chat. So if you go above in the comments, you should be able to see a video link that I just shared. So watch that video. There are a couple of links which you can use for starting your open source contributions, and I think that should potentially help you. Omar is asking another thing just to share. I recently had a chance to work with Airlift, and guess what? Your library NGXR is being there we go, yay! Yes, I'm pretty happy about the library. It's turning out really good. I think it recently crossed 5 million installs or something. And that is absolutely amazing. Maybe it crossed 6 million, I don't know. Let's quickly check. No, it's 5.5 million. It's good. It's not bad. But the thing is, yeah, it also includes like CI/CD installs as well, because it's just npm installs. So whenever you are running your pipelines or pull requests, it does install the library as well, and that also counts. But I'm happy. The number looks good. But I think one really interesting thing, or one really important aspect of libraries, I'm not sure if you have seen that or not. I can quickly share actually. Screen and cam, there we go. So here it shows how many installs it has. So Facebook people cannot see it, sorry, unfortunately. If you want to see, you can go to YouTube. But here there should be something like used by, and this is really important. So this library is used by
about 2400 repositories, uh, or yeah, repositories on GitHub, being used by about 101 packages, and these are just the public repositories. Imagine how many repositories would be using that which are private. And it recently crossed 400 stars as well. Yay! Super happy. What keeps you motivated, asks Hasham. These are the things that keep me motivated. I mean, just look at the numbers and you'll feel like, yay, I'm doing things. These many people are using my work. Similarly, if I release a video, I see, hey, 5 people viewed my video. Yes. So these are the things that keep me motivated. Just looking at things and realizing that whatever I'm doing is making an impact. So I think that's really what you can do as well, to kind of feel good about what you're doing. Vishal, I hope that I answered your question. You're asking, when do you release your Angular book? That's a really good question. My Angular book is being released about 16 days later, which is 6th of August. But if you're interested in buying it, which I'm kind of skeptical about people from Pakistan that they would actually buy, but still I'm sharing it, even if you want to have a look or ask your teams to do that. But essentially it's going to be released on 6th of August, and it's also, let me think. Yeah, it is right now available for pre-orders on Amazon. So if you want to have a look, actually, you can go to this link. I can share it right there, just to have a link. If you're interested in pre-ordering it, very good. I would be more than happy. Yeah, but I'm not really thinking that a lot of people from Pakistan would be buying that. So there's the NG book. The short link is snayas.com/ngbook, and you should be able to see the book there. The really good thing is the sort of cover of the book has now been upgraded, so I am really happy about that one. So I hope that I answered the question, Muhammad Hasham. Avoiding the burnout, keeping things motivated, it's all the work that we do, and it's kind of small feedbacks that I get. So when I create a YouTube video, I look at the comments, people praising like, hey, this was really helpful, this was good, and I'm like, oh yay, awesome. I look at the analytics to see how many people are using my stuff. Similarly, for instance, if I share an article on one of my blog posts, I do try to see how many people are actually visiting my blog or my article. And that also kind of keeps me motivated, like, hey, these number of people are actually watching my content. So yeah, try to, if you want to be motivated, it depends on what keeps you motivated. Is it money? Is it praise? Because for me, it has been praise. I mean, in some of the parts of my career as well, I used to work on a lower rate on compared to what I should be getting. But what kept me going was obviously praise, that hey, SN is doing really good, or SN is this, blah blah blah, whatever. So yeah, that keeps me motivated. Hope that answers the question. Muhammad Usama says, Assalamu alaikum SN bhai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Cool. Let's see. So I think we are about one hour mark. I would just have 10 minutes more, and then we can wrap this up. Facebook people, if you want to have a look at the book, you can probably see it here. That's the Angular cookbook, and that's going to be released on 6th of August, as it says right here. I think it's going to be yeah, I'm not sure. It's sort of expensive from a learning standpoint, but also then there's a lot of content as well. And I'm not sharing my screen, so it's this is the book for those of you who are watching on YouTube.
And yeah, it's kind of around $34 or $35, so to say, I think, which is about, I don't know, 6,000 Pakistani rupees or something. But yeah, there's a lot of content, and I think more than individuals, sort of enterprises would be interested in the book. So not sure, we'll see. Awesome. I don't think we have any more questions, and if that's the case, then I'm gonna wrap this stream up and I'm gonna call it a day. Then I'm gonna play some games, relax a bit, and then we'll see what comes next. I'll give it a minute if anyone has any more questions, or we could then go away. One of the things that you don't know, maybe, is something called bio.link. I'm not sure if you have seen this one, but if you have not, I'm going to share my screen again. So there's something called bio.link, which is an app that helps you have all the links at one place. So it was really interesting. And if you don't have, if you haven't got your own link here, you can quickly go there and then just claim your name, because it's really new. But I mean, for instance, Omar, if you go here and just do this or this, you should be able to get your name. I already got mine, which is, and the good thing about this one is that you can have all your links kind of aligned based on your needs. So you can see that this really gives this really nice UI with all the links that you would want to do. It also has yeah, the responsiveness handled as well. For instance, if I was to go for iPhone X, this is how it would look. If I would go with Pixel, this is how it would. So it's all good in my opinion, and it's a really nice way to have all your links at one place. So I'm going to be using bio.link more or less from now. And as you can see, I already put the Angular cookbook here as well. And you can actually design it yourself in terms of what colors do you want, what links do you want. So it's a really nice and handy tool for keeping all your links at one place. And I've kind of changed my links on my bios from different places to this bio.link application. And this is such a neat idea. It's really simple, and there are a lot of people using that. So if you have not claimed your name, just go right there and claim it. One of the things that I know is that you can also get this blue tick around your name. And the way to do that is that go to Twitter. There should be a bio.link account or something, and then you should see a tweet that you need to quote retweet, and then you will get this blue tick around your name. I see one question from Mohammed Usama. Asan, my question is how to start freelancing with cross-platform development with Flutter as a beginner. This is an interesting topic. So the thing is that if you're a beginner and if you don't have any portfolio, it's really hard to get projects for freelancing. What you can do is go to different projects, for instance on freelancer.com or whatever, and then try to bid with a lower price so you get a chance to work on things. There should be some projects which specifically ask for juniors or freshers or for low rates. So in that case, you should only target for lower rate projects that give you a chance to work on things. So I would suggest going to freelancer.com. I think it's free. It doesn't cost you anything. Upwork is a bit different. It only has a limited bids per month, and it's a bit difficult to work with, क्योंकि वहाँ पे quality का भी काफ़ी difference होता है और फिर वहाँ पे profile बनाना भी बहुत आसान नहीं है. So go to freelancer.com and then create your profile there, and then bid on different Flutter or cross-platform projects, whatever you're interested in your skills. उससे भी पहले try to create your profile on freelancer.com. So you should have all your profile things listed first, and then you apply on different projects, and hopefully inshallah you'll get some of the projects. So yeah, I think that's pretty much it what I wanted to share.
Ding, ding, ding. Awesome. Since there are no questions on YouTube that I see, I think we're good for today. It's about 55 minutes since we have been streaming. So it's gonna be about what time is it? 5:54 p.m. So it's 6 p.m. here. It should be 9 p.m. in Pakistan, which means you might already have had your dinner, or you would want to have it now. But in any case, all the best to you and have a good weekend. And it was really nice talking to you. And I'm going to see you later. Thank you. Allah Hafiz.